morning, dear students. Today we will continue our lesson 1, Pumpkin in a Jar. Last day we had read the first page. Today we will continue the story from second page. Your Majesty, of course I can get you cool water right now, but I only have one old clay jar to serve the water in. I am afraid you will have to drink out of that. Never mind the jar. If the water is cool, I will gladly drink from the old clay jar, the king replied. जब मेडन ने कहा कि मैं पिला तो सकती हूँ कोल्ड वाटर, बट मेरे पास सिर्फ एक ही मिट्टी का जार है, तो किंग ने बोला अगर वाटर इज़ कूल, पानी ठंडा होगा तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग विद दैट ओल्ड क्ले जार. सो द मेडन वेंट इनसाइड द हट, फेच्ड द जार एंड फिल्ड इट विथ कूल क्लियर वाटर. मेडन अंदर गई अपने हट के और वो साफ ठंडा पानी भरकर ले आई. द थर्स्टी किंग ड्रैंक इट विथ प्लेजर. After he had given his horse some water as well, the king gave the jar back to the maiden. The maiden took the jar and all of a sudden she struck the jar on the wall of the hut and it shattered to bits. The king was surprised. किंग ने खुद पहले पानी पिया और फिर अपने हॉर्स को पिलाया और जार वापस किया. मेडन ने वो जार लेकर उसे दीवार से मारकर फोड़ दिया. So king was very surprised. Why did you break the jar? I thought this was the only jar you had. I am sorry, Your Majesty. How could I let anyone else use it after you? I may live in the forest, but I do know how to pay respect to the king. कैसे मैं राजा ने जिस घड़े से पानी पिया वो किसी मामूली आदमी को यूज़ करने दे सकती हूँ, इसीलिए मैंने इसे फोड़ दिया. The king was impressed. He had not met anyone like her before. On his way back to the palace, he thought, she is very thoughtful and kind. I wonder if she is clever too. आई विल हैव टू फाइंड आउट. तो किंग ने सोचा ये बहुत ही थॉटफुल और काइंड लेडी तो है, बट मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या ये क्लेवर भी है. अ फ्यू डेज लेटर द किंग कॉल्ड अ सोल्जर एंड आस्क्ड हिम टू कैरी अ जार टू द मेडन. रिमेंबर सेड द किंग, द जार मस्ट हैव एन ओपनिंग ओनली एन इंच अक्रॉस द टॉप. टेल द मेडन आई वॉन्ट हर टू पुट अ होल पम्पकिन इन टू इट. शी मस्ट नॉट ब्रेक द जार और द पम्पकिन. To check whether she was clever or not, किंग ने अपने सोल्जर्स से कहा कि एक जार लेकर आओ जिसमें सिर्फ 1 इंच टॉप पे ओपनिंग होनी चाहिए, खुला होना चाहिए, और मेडन से कहना कि वो इसमें एक पम्पकिन डालकर लाए. ना तो जार टूटना चाहिए और ना ही पम्पकिन. सरप्राइज सोल्जर टुक द किंग्स मैसेज टू द मेडन इन द फॉरेस्ट एंड सून came back with another message. The maiden had said that she would bring the jar to the king in a few months. क्या रिप्लाई भेजा कि मैं कुछ मंथ्स बाद जार लेकर के वापस आऊँगी. द किंग वेटेड ईगरली. आफ्टर सेवरल मंथ्स, कुछ मंथ्स के बाद, द मेडन केम टू द पैलेस विद द जार इन हर हैंड. जार लेकर के मेडन आई. द किंग वॉज अस्टॉनिश्ड. थ्रू द टाइनी ओपनिंग ऑफ द जार ही कुड सी एन एनॉर्मस पम्पकिन. He examined the jar closely to make sure that it was the same jar. It was. What's more, both the pumpkin and the jar were completely undamaged. Astonished means king बहुत ही सरप्राइज हो गया कि हाँ ये तो वही जार है. किंग ने ध्यान से देखा कि कहीं ये दूसरा जार तो नहीं, तो देखा नहीं ये वही जार है और उसके अंदर एक एनॉर्मस बड़ा सा पम्पकिन भी था. He asked the maiden to marry him on the spot as she was thoughtful, kind and clever. She agreed. When the king found out how she had managed to fit the whole pumpkin into the jar, he laughed long and hard. Do you know how she did it? तो किंग को जब मालूम पड़ा असली बात कि कैसे उसने पम्पकिन को जार में डाला, किंग को बहुत हंसी आई. Now do you know, क्या आपको मालूम है कैसे उसने ये किया? So you find out. Your homework is to read the lesson thoroughly and learn the word meanings properly. When I send you the question answers of this lesson, you will complete that work in your notebooks.